हे गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम आपको जल जीरा बनाना सिखाएंगे। जल जीरा बनाने के लिए हमें चाहिए मिंट 1 कप, इमली का रस हाफ कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून यानी कि 1 नींबू का रस, ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक हाफ टी स्पून, जिंजर क्रश्ड 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, कास्टर शुगर 4 टेबलस्पून, ice cold water 2 glass and bundi for garnishing. We will start by adding our mints in a juicer grinder, followed by imli ka ras. Then we will add in lemon juice, jeera powder, caster sugar, काला नमक, फ्रेशली क्रश्ड जिंजर एंड हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे एंड विल मेक अ स्मूथ पेस्ट। स्मूथ पेस्ट बन जाने पर हम 2 ग्लास आइस कोल्ड वाटर ऐड करेंगे। आइस कोल्ड वाटर ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को फिर से एटलीस्ट फॉर 5 मिनट ग्राइंड करेंगे सो दैट एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड रियली वेल। And there it is. Your tasty and refreshing Jal Jeera is completely ready. Serve it with extra ice on top and garnish it with khari bundi. It will give it a good crunch. And there it is. Tasty, amazing and very refreshing Jal Jeera is ready for you to beat the heat. Do try it out and let me know how it turned out for you in the comment section below. Thank you so much for watching Nims Kitchen. Please do like, share my videos, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe for more such amazing content and videos. Until next time, bye bye.